Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Uh, Today we are going to start unit number 4 of your English 1. Just like the previous 3 units, this unit has also been divided into 5 sections: section A, B, C, D and E, and we will go through each and every section and we will try to attempt as many exercises as possible. The first section is function of the language, and one function of the language is expressing the possibility and impossibility. That you use language, English language or any other language, to express the possibility of a certain situation or to express the impossibility of a certain situation, कि आया ये चीज़ मुमकिन है या ये चीज़ मुमकिन नहीं है. ठीक है. So you will learn to construct sentences that you can use to express the possibility and impossibility. Okay. Something is possible and certain if it is meaningful. Something that makes no sense or is meaningless is impossibility or uncertainty. Read the examples. I think it is possible to have a pay raise in this year's budget. I don't think it is impossible to have a pay raise in this year's budget. ठीक है. तो मीनिंग जो है वो एक ही है. ऊपर जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाई गई है और नीचे जो है वो मतलब कि पॉसिबिलिटी कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि बजट में जो है वो तनख्वाहों में इजाफा ना हो. So suppose you are sure and certain that you will go straight home from work today and have lunch with your family, but this certainty or possibility can have many impossibilities or uncertainties. Read these examples. Examples जो है ये हमारा जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज़ के बारे में उसको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करती हैं, क्लियर करती हैं, और हमारे माइंड में एक वो आइडिया जो होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है चीज़ों का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है. ठीक है. सो लेट अस नाउ रीड द एग्जांपल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द कॉलम you will read examples related to possibility or certainty. It is possible that I reach home in time for lunch. It is quite possible that I face no traffic rush on the road and reach home on time. ठीक है. ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. मुमकिन है कि ऐसा हो कि वो शख्स वक्त पर घर पहुंच जाए और दोपहर का खाना यानी कि लंच जो है उसका वो अपनी फैमिली के साथ करे. दूसरी जानिब जो है वो इम्पॉसिबिलिटी दिखाई गई है. इट मे नॉट बी पॉसिबल एज आई मे गेट लेट ड्यू टू सम ऑफिस एमरजेंसी. ये भी मुमकिन है कि किसी ऑफिस एमरजेंसी की वजह से जो है वो लेट हो जाए. इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू जॉइन माई फैमिली फॉर लंच बिकॉज देयर इज़ सो मच ट्रैफिक मेस ऑन द रोड ड्यूरिंग दैट टाइम. कि उस वक्त जो है वो रोड पर बहुत ज़्यादा रश होता है, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट रश it may not be possible for me to reach home at time. So in our everyday life we face many situations where we have to express possibilities or certainties along with impossibilities or uncertainties in the situations where we are uncertain कि पता नहीं ऐसा हो या हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ना हो. ओके. we can say that sometimes possibilities are coupled with impossibilities. True. कि बाज़ औक़ात जब हम पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके साथ नेचुरली ही हम जो है वो इम्पॉसिबिलिटी या जो डाउट होता है उसको भी अटैच कर देते हैं. Now you are going to listen to Pakistani politician Mr. Hussain talking about possible peace plans between India and Pakistan. Listen to what he has to say. ठीक है.
there is this speech of Mr. Hussain, ठीक है, we are going to read it, and in this speech there are many possibilities of peace between India and Pakistan that have been discussed. Please give it a reading. There are many possibilities under consideration that can help solve the long-standing disputes between India and Pakistan, but these options seem impossible to be accepted by various players involved in the peace process. ठीक है, यहाँ पे जो है वो इम्पॉसिबिलिटी का जिक्र आ गया और यहाँ पे जो है वो मैनी पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र आ गया. ठीक है जी. देयर are many possible workable solutions and are quite possible that we may reach to consensus on many issues. However, there are some uncertainties too, because it is not possible to convince everybody on each and every issue, because there might be some disagreements. Let me discuss some possibilities and impossibilities involved in this dispute. ठीक है, इसके बाद पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनकी डिस्कशन जारी है. वन ऑप्शन और पॉसिबिलिटी इज़ टू टर्न द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी कश्मीर इनटू एन इंटरनेशनल बॉर्डर. However, such a plan would be impossible and unacceptable to both to Pakistan and to many Kashmiris living on either side of the line of control. Okay. इसके अंदर जो है वो पॉसिबिलिटी भी डिस्कस की गई है और इम्पॉसिबिलिटी जो है वो भी डिस्कस की गई है. बोथ थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड पैरेलल. सेकंड पॉसिबिलिटी, अनदर पॉसिबिलिटी वुड बी अ प्लेबिसिट, जिसे हम कहते हैं हक के खुद इरादियत, which would give Kashmiris the choice of either Indian or Pakistani rule, but again this is not possible as some circles would oppose it. Possibility 3, independence. A 5-phase formula for independence to be overseen by the UN committee may be quite possible. It can be possible only if representatives from a wide variety of countries may oversee a phased withdrawal of troops by both countries, but again within Kashmir this might not be possible solution, as plebiscite leading to independence could not be welcomed by all. Possibility number 4, religious segregation. A lot of people have suggested another possibility, and that is to redraw the boundaries of Kashmir on religious lines. This would mean that most of the Muslim dominated areas of Indian Kashmir could go to Pakistan and the Hindu dominated areas would remain with India. But even this possibility has serious flaws. I think this is not possible solution, as thousands of people will be uprooted as a result of such partition. Moreover, it is quite possible that the international community would not support a plan of this sort. Mr. Hussein's talk has many expressions that express possibilities and impossibilities. Let us repeat these expressions. Possibilities के जो expressions हैं, ठीक है, अब आगे ये possibilities की heading के under they have been discussed. There are many possibilities under consideration that can help solve the long-standing dispute between India and Pakistan. आप देखें तो यहाँ पे many possibilities का word आया है, ठीक है. Again जो है यहाँ पे many possible and workable solutions, ठीक है. One option or possibility is, ठीक है. Another possibility, ठीक है. A 5-phase formula for independence is quite possible, ठीक है. तो ये जो word है possible, ये या impossible, ये हमें जो है वो बताता है कि जनाब के इस लाइन के अंदर जो है वो possibility जो है वो डिस्कस की गई है. A lot of people have suggested another possibility, ठीक है. तो अगेन पॉसिबिलिटी का वर्ड आ गया. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है. देन आफ्टर दैट देयर आर एक्सप्रेशंस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी. द एक्सप्रेशंस दैट टेल अस दैट इम्पॉसिबिलिटी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दीज लाइन्स. दीज ऑप्शंस सीम इम्पॉसिबल, ठीक है. अगेन वर्डिंग जो है
देर आर सम अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो इम्पॉसिबिलिटी की जानिब रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है. सच अ प्लान वुड बी इम्पॉसिबल एंड अनएक्सेप्टेबल टू बोथ, ठीक है. तो नॉट पॉसिबल, माइट नॉट बी पॉसिबल, ठीक है. तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस दे कैन बी यूज्ड टू express impossibility or uncertainty regarding a situation. इसके अलावा बाद जो है वो चंद कोटेशंस आपको दी गई हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं. लीव इट, पाकिस्तान रेडी टू लॉन्च श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस, ठीक है. ये न्यूज़ आइटम है, इसकी रीडिंग करें. 1. Pakistan Foreign Minister has said that all the arrangements for launching the Muzaffarabad-Srinagar bus service has been finalized. He said the high-level meetings on expected Muzaffarabad-Srinagar bus service will most probably take place in November and hoped for the progress. While talking to the media, the Foreign Minister said that both countries are certain that the bus service would definitely benefit Kashmiris living on both sides of the line of control, because the divided families long to see their loved ones, and this bus service will not only bring the families together but the two countries closer too. The minister said that there had been a frequent people to people contact between Pakistan and India, and there are strong possibilities that these people to people contacts, culture and sports exchange, peace marches will create favorable environment for both countries and help improve ties. ये हेल्प इम्प्रूव टाइज जो है ये भी देखें पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है. ऊपर भी जो है देर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी का एक्सप्रेशन जो है वो आपको बताया गया है. अलॉन्ग विद मैनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, द मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस वुड क्रिएट एन इमेंस पॉसिबिलिटी of improving ties between the two countries and both sides are certain. Certain का मतलब again possibility है, यहाँ पे भी possibility express की गई है that many difficult issues may be resolved. The minister added, we are in positive frame of mind and we expect that India would most likely reciprocate our positive move. मोस्ट लाइकली का जो एक्सप्रेशन है ये भी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है. बोथ कंट्रीज अनडाउटली नीड टू नर्चर अ हेल्दी पोलिटिकल कल्चरल विल. वी हैव टू क्रिएट एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर विदाउट विच इट विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, अब जो है वो इम्पॉसिबिलिटी टू रिजॉल्व द कम्प्लेक्स इशूज़. फॉरेन मिनिस्टर आल्सो फेवर्ड द आइडिया ऑफ रिमूविंग favored the idea is an expression that has been used to express the possibility or certainty of removing the requirements of passport and visas, and express that there is a great possibility of doing away with both in future. However, this issue will perhaps take time and may not be possible in the near future. May not be possible, ठीक है, impossibility, as it needs thorough debate and negotiations, ठीक है. The above news item has 5 paragraphs. All the paragraphs express one common function. Read it again with the close attention and decide what it is conveying. Is it conveying the idea of possible peace between India and Pakistan or the impossibility of peace between the two countries? Then make list of all the expressions of possibility from the news items. तो इसमें जो आखिरी 3 पैराग्राफ्स हैं उनका तो मैंने जो एक्सप्रेशंस हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है. ये 2 पैराग्राफ जो ऊपर वाले हैं, पैराग्राफ नंबर 1 एंड पैराग्राफ नंबर 2, you have to give reading to these paragraphs and underline the expressions that have been used to express the possibility or impossibility, ठीक है. Open your books and you can start underlining or highlighting these things. If you do not have your book, you can download the books in soft font from the website of Allama Iqbal Open University. Let us now move to exercise number 2. Suppose you are traveling on a bus which is taking you from Muzaffarabad to Srinagar, Kashmir.
You are talking to a fellow passenger sitting next to you and discussing the possibilities and impossibilities involved in this peace initiative. Here is an imaginary dialogue between you and a fellow passenger. Complete the dialogue by writing appropriate expressions of possibility and impossibility. Follow the cue given in bracket. ठीक है जी, तो you are supposed to attempt this exercise. Okay, I am so excited to be one of the passengers who are taking the first historical trip to Srinagar. Is this your first visit too? Yes, but like you, I'm not excited. Instead, I am little scared because I think it will not be possible to have a safe and smooth journey. I don't think so. Express possibility. I don't think so. अब यहाँ पे वो उसकी बात को रद्द कर रहा है, उससे डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है, मतलब कि वो पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है. Now you are passenger and express the possibility of attacks on the way. Complete the dialogue. ठीक है. Using the given direction and cues, you have to complete these dialogues. Express impossibility of attacks on the way and possibility of smooth journey. तो यहाँ पे ऐसा डायलॉग लिखेंगे कि जिसमें अटैक्स की इम्पॉसिबिलिटी जो है उसको एक्सप्रेस किया जाए और स्मूथ जर्नी जो है उसको उसकी पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाए. Okay, let us move to next. We can express possibility and impossibility in various different ways. For example, we can be very sure and certain. We cannot be really sure, and it's like 50-50 at times. We are very little sure and we know that it is not possible. So how can we express possibility and impossibility in its various degrees? Read the explanation given below and try to learn the different degrees of expressing possibilities और certainties. ठीक है. डिग्रीज अब जैसे स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट था, स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट था, स्लाइट एग्रीमेंट, स्लाइट डिसएग्रीमेंट, ऐसे ही डिग्रीज ऑफ सर्टेनिटीज़ और डिग्रीज ऑफ अनसर्टेनिटी जो हैं ये हैं. ठीक है. तो वेरी सर्टन जो है या हाई सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए विल का वर्ड जो है वो यूज़ होता है. स्लाइट सर्टेनिटी जो है कि मतलब के दरमियाना कि कुछ थोड़ा बहुत आप जो है वो बहुत सर्टन हो. ठीक है. तो उसके लिए माइट और मे के जो वर्ड्स हैं इनको आप जो है वो यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, माइट यूज़ किया गया है, कुड का यूज़ किया गया है, मे का यूज़ किया गया है. ठीक है. तो यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशंस कैन बी यूज टू एक्सप्रेस स्लाइट पॉसिबिलिटी. जी इसके बाद जो वर्ड्स हैं जो कि वेरी लो मतलब कि पॉसिबिलिटी जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो है माइट नॉट, डाउटफुल या अनलाइकली. ठीक है. इस टाइप के वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं वो वेरी लो पॉसिबिलिटी के बहुत ही कम इम्कानात में होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है. उसके स्टूडेंट्स वांट टू नो व्हेन दे शुड यूज़ मे बी, when they should use perhaps in English. Both these words are still very commonly used and have the same meanings. कि maybe का और perhaps का सेम यूज़ है और उनको इंटरचेंजेबली यानी कि एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है. ठीक है. आगे maybe और perhaps के यूज़ की चंद एग्जांपल्स हैं आपके सामने. ठीक है. Now let us move on to exercise number 3. Do you think it is possible to have all the above 5 wishes come true in our lives? ठीक है. ये जो 5 wishes हैं ऊपर. ठीक है. Don't you think it is not possible? It is not really possible. Write about your wishes and dreams. Write 2 possible wishes that you think will perhaps come true and 2 that you think might not be possible to happen. Follow the examples. ठीक है.
एग्जांपल्स को फॉलो करें और ऐसे इस एक्सरसाइज को आप अटेम्प्ट करें. नाउ लेट अस मूव ऑन to exercise number 4. Express one possibility and one impossibility about the following aspects of society. Crime and law enforcement. अब आपने इसके बारे में एक मतलब कि पॉसिबिलिटी और एक इम्पॉसिबिलिटी जो है उसको एक्सप्रेस करना है. तो इट मे बी possible that law enforcement agencies could control the crime in our country. और इसके वजह से मतलब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट द क्राइम ऑल टुगेदर इन द सोसाइटी, कि माशरे से जराइम को बिल्कुल ख़त्म करना जो है वो नामुमकिन बात है. ठीक है. एजुकेशन रिफॉर्म्स पे ऐसे ही आपने एक जो है वो पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करनी है और एक उसके बाद आपने यू हैव टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है. नाउ लेट अस ऑन मूव ऑन. डॉक्टर Sabiha Shah is an environment activist. She is struggling hard to preserve Pakistan's environment conditions and reduce the negative impact on our environment. Let us listen what she has to say. ठीक है. ये उनका टेक्स्ट है, इसको आपने अपनी बुक्स में रीडिंग देनी है. Human beings are largely responsible for the degradation around the world. Environment degradation is linked with population growth, and population growth leads to poverty. It is impossible to achieve our goal unless we control the rate of population growth in Pakistan. The world is certainly becoming more and more polluted since the beginning of the industrial age. Overcrowding, inadequate sanitation, pollution and natural disaster affect the health of the people, especially the poor population. It is becoming impossible for them to live normal and healthy lives. Environment degradation threatens their livelihoods. ठीक है. इसमें आपने पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उनको आपने कि जो उन्होंने पॉसिबल मेजर्स जो हैं उनको अडॉप्ट करने का कहा है उनको आप नोट करें, और जो मेजर्स जो हैं जो इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट हैं उनको आप जो है वो नोट करें इसमें. ठीक है. नाउ प्लीज़ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर बुक, दैट इज़ मॉडल वर्ब्स. इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट मॉडल वर्ब्स. व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? तो मॉडल वर्ब्स की डेफिनेशन ये है. मॉडल वर्ब्स आर स्पेशल वर्ब्स विच बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम नॉर्मल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स are also used to express certainty, possibility, probability and impossibility. ठीक है. कि मॉडल वर्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है certainty, probability, possibility और impossibility को एक्सप्रेस करने के लिए. और ये मॉडल वर्ब्स की लिस्ट है आपके सामने. can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to और must. ठीक है. जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ टू का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ऑट जो है ये इसमें एक एक्सेप्शन है कि ऑट के साथ हमेशा टू जो है वो उसका इस्तेमाल होता है. नाउ व्हेन डू वी यूज़ दीज मॉडल वर्ब्स? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी विश टू टॉक अबाउट समवन्स एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग. ठीक है. नंबर 1 पे एबिलिटी या इनएबिलिटी के बारे में बात करने के लिए हम मॉडल वर्ब कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. उसके बाद है टू टॉक. इसकी एग्जांपल्स हैं. वी कैन फाइंड योर हाउस विदाउट एनी प्रॉब्लम. ही कांट हैव अ न्यू जॉब विदाउट प्रॉपर डिग्री. ठीक है. दूसरा जो इसका यूज़ है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज़ नेसेसरी. ठीक है. ज़रूरी जो बात होती है उसके लिए कि यू मस्ट ऑलवेज हैव योर ड्राइवर्स लाइसेंस व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार. यू नीड नॉट कैरी अ लॉट ऑफ मनी विद यू इन दी बाज़ार. कि बाज़ार में ज़्यादा पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो ऐसे एक्शंस जो कि नेसेसरी होते हैं उसको उसके बारे में बात करने के लिए हम इनको मॉडल वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं. टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन दैट इज़ पॉसिबल और इम्पॉसिबल के पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी मॉडल वर्ब्स जो हैं उनका यूज़ होता है. बी केयरफुल विद
दैट ग्लास यू माइट कट योर फिंगर्स, ठीक है। तो ये, और डोंट चेंज योर ट्रैवल प्लान्स, यू माइट नॉट गेट द टिकट अगेन, ठीक है। तो मतलब कि पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मे और माइट जो है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा जी, प्रेजेंट फॉर्म इनकी जो है वो क्या है, कैन है और पास में ये मतलब कि कुड हो जाता है, मे जो है वो माइट हो जाता है, विल वुड हो जाता है, शेल जो है उसकी पास फॉर्म शुड है, मस्ट की पास फॉर्म नहीं है, ऑट की पास फॉर्म नहीं है, नीड की जो है वो भी पास फॉर्म नहीं है। द मोस्ट डेफिनेट डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड विद विल एंड वुड, के यकीन हो जिस बारे में जो 100% पॉसिबिलिटी है उसके बारे में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए विल और वुड का इस्तेमाल होता है। जहाँ पे थोड़ा बहुत चांस हो मतलब कि 50-50 हो, वहाँ पे कैन कुड का यूज़ हो सकता है। शेल शुड जो है ये भी विल और वुड की तरह जो है वो 100% पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे और माइट जो है ये 25% पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। Read these examples that will make you understand how to use the modal verbs। इसके बाद आपको चंद एग्जांपल्स दी गई हैं जहाँ पे आपको जो है वो हेल्प मिलेगी to understand the use of modal verbs। इसमें will और would का यूज़ जो है वो आपको फर्स्ट इसमें दिखाया गया है। I will wash the dishes, अब ये 100% पॉसिबिलिटी है। I will do exercise later if I am not tired, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। The meeting will be over soon, 100% पॉसिबिलिटी। The river will overflow after rain, 100% possibility। I hear the whistle, that would be 5 o'clock train, 100% possibility। My baby would gain enough weight if she eats properly, again 100% possibility। After work he would walk to his home, again 100% possibility। Can and could are used to express ability, willingness and possibility, ठीक है। can और could का यूज़ इसके बाद आपको बताया गया है कि इसमें ability कि आपके अंदर जो है वो सलाहियत है किसी मतलब कोई काम करने की, उसको बयान करने के लिए। willingness कि आप रज़ामंदी या फिर पॉसिबिलिटी, इसके लिए कैन और कुड का इस्तेमाल हो सकता है। तो एग्जांपल्स, ही कैन स्पीक अरेबिक, आई नो यू कैन ड्राइव सो व्हाई डोंट यू, वी कुड कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर्स एंड आस्क देम इफ़ वी कैन डिले द डिलीवरी, आई कुड हैव बीन द चैम्पियन इफ़ आई प्रैक्टिस्ड सीरियसली, कुड हैव बीन, ठीक है। तो अगेन पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस किया गया। मे और माइट जो है ये इसका यूज़ जो होता है, इसका यूज़ परमिशन लेने के लिए नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे टू एक्सप्रेस दी पॉसिबिलिटी। दो इसके यूजेस हैं, मे के और माइट के, ठीक है। मे आई लीव द क्लास अर्ली, ठीक है, यहाँ पे इजाज़त की सेंस में यूज़ हो रहा है। द पायलट मे हैव बीन इंजर्ड इन द क्रैश, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की सेंस में। वी मे गो टू द पार्टी, अगेन पॉसिबिलिटी की सेंस में। शी मे बी माई टीचर, अगेन पॉसिबिलिटी की सेंस में। शी माइट टेक बायोलॉजी, अगेन पॉसिबिलिटी की सेंस में। ही माइट बी एट होम बट ही यूजली गोज जॉगिंग, अगेन पॉसिबिलिटी। दे मे ड्रॉप इन दी इवनिंग, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अगेन मे का इस्तेमाल है, ठीक है। जी, इसके बाद शैल और शुड का यूज़ है, ठीक है। शैल एंड शुड, दे आर यूज टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशंस, कि जब किसी की कोई हिदायत होती या ऑब्लिगेशन, कि जहाँ पे हमारा फ्रीज़ा होता है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन कि जहाँ पे हमसे कोई मतलब कि तवक्को होती है। इंटेंशन या इरादा या फिर पॉसिबिलिटी, ठीक है। इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए शैल का और शुड का यूज़ होता है। आई शैल गो टुमारो इफ़ वेदर इम्प्रूव्स, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है
रेहान shall take few days off from work to visit his parents in Hyderabad. यहाँ पे जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही है. We should save some money to buy a small house. एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये बल्कि इंटेंशन है, ठीक है. You really should start eating better. ये रिकमेंडेशन है, ठीक है. They should be in Peshawar by now. ये जो है पॉसिबिलिटी है, ठीक है. तो शैल का और शुड का इस्तेमाल जो है वो ऐसे होता है. नाउ प्रैक्टिस यूजिंग मॉडल वर्ब्स. यूज़ वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल द गैप. दे डैश बी अवे फॉर द वीकेंड बट आई एम नॉट श्योर. तो यहाँ पे माइट का वर्ड होगा, ठीक है, क्योंकि श्योर नहीं है. कैन अगर होता तो वो 100% सर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है. यू डैश लीव नाउ इफ़ यू विश. You may leave now if you wish, ठीक है. Dash you open the window a bit please. Could you open the window a bit please? He dash be from Kohat. Judging by his accent, he could be from Kohat. Can you swim? Listen please, you dash speak during the exam. You may not speak during the exam. They can't still, they dash still be out. They may not still be out. You dash smoke on the bus. You could not smoke on the bus. With luck tomorrow dash be a cooler day. Tomorrow can be a cooler day क्योंकि फ्यूचर है और पॉसिबिलिटी है. You dash be right but I am going back to check the times. You might be right but I am going back to check the times. Okay. Use must, might, may, could or can't plus the correct form of verb. जी इनमें आपने must, might, may, could और can't का इस्तेमाल करना है. साथ उसके जो है वो आपने वर्ब की जो है करेक्ट फॉर्म उसको भी यूज़ करना है. That is exercise number 8. कमेंट्स में आप जो है वो इसको फिल करके मुझे बता सकते हैं. I'll give you 5 minutes to complete this exercise. तो यहाँ पर आएगा मस्ट बी she may think यहाँ पे कांट आएगा. ऐसे बाकी जो है उनको आपने फिल करना है, ठीक है. Then there is exercise number 9. Why are these people doing what they are doing? For example, he is yawning. He may be very tired. He is sneezing and coughing.
may be cold, ठीक है. She keeps crying, she may be sad. तो ऐसे he is shouting, he may be angry. His car doesn't start, it might be broken. ठीक है. So that is how you solve these exercises. Now let us move on to exercise number 10. In each of these three sentences, the meaning of the modal auxiliary can is different. Write what meaning the modal verb can is conveying in the following sentences. Can I go now is used to express. यहाँ पे क्या express कर रहा है जी? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कैन आई गो नाउ, यहाँ पे कैन जो है वो क्या फंक्शन सर अंजाम दे रहा है. ये यहाँ पे परमिशन की सेंस दे रहा है. द सेमिनार कैन बी मूव टू ट्यूसडे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. आई कैन स्पीक फ्रेंच, यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है. ठीक है. तो आई हैव सॉल्व्ड द फर्स्ट वन फॉर यू. ओके, दैट इज द एंड ऑफ सेक्शन बी, दैट वाज ग्रामर. तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग अबाउट मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स जो हैं इनका यूज़ जो है वो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा. ठीक है, कि वैरायटी ऑफ फंक्शंस जो हैं वो हम सर अंजाम दे सकते हैं बाय यूजिंग दीज मॉडल वर्ब्स. द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इज़ रीडिंग, एंड इन रीडिंग यू आर गोइंग टू लर्न एन इम्पोर्टेंट स्किल, रादर स्किल्स, दैट इज़ स्किमिंग एंड स्कैनिंग. स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है? ऑफ्टन आपने जो है वो सुना होगा वर्ड स्किमिंग, कि दूध जो है उसको स्किम किया गया. स्किम का मतलब ये होता है, दूध को स्किम करने का मतलब ये होता है कि उसमें से फैट्स को या मलाई को जो है वो निकाल लेना. ठीक है. स्कैन करना जो है ये भी बड़ा कॉमन सा वर्ड है. स्कैन जो अब कंप्यूटर, आप सबके पास कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप उसमें एंटीवायरस जो है वो इंस्टॉल करते हैं. जैसे ही आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो आप एंटीवायरस जो है वो स्कैन करना शुरू कर देता है आपके कंप्यूटर को फॉर वायरस. तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी जितनी फाइल्स आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में हैं वो उनका जायज़ा ले रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी फ़ाइल है जो कि दैट कैन प्रूव हार्मफुल. तो स्कैन का बेसिकली मतलब ये होता है कि तेज़ी से नज़र दौड़ाना ताकि जो मुतलका जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको लोकेट किया जा सके. स्किम का मतलब होता है मलाई निकालना, यानी कि आइडिया हासिल करना. जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो इसमें यह है कि स्किमिंग मींस टू गेट एन ओवरव्यू, कि ओवरव्यू जो है वो लेना टेक्स्ट का, कि इसके अंदर क्या बात की गई है. We read differently in different situations. The technique we choose depends on the purpose for reading. For example, you might be reading for enjoyment, to get information, or to complete a course-related task. You need to adjust your reading speed and technique depending upon your purpose. कि जो कोई भी हम रीडिंग वगैरह करते हैं तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है, उसका कोई ना कोई हमारा पर्पज़ होता है रीडिंग का. ठीक है. तो वो जो पर्पज़ है उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट हम अपना रीडिंग का जो मेथड है उसको अडॉप्ट करते हैं, कि जो भी हमारा पर्पज़ है. ठीक है. कीपिंग इन व्यू जो भी हमारा मतलब कि मकसद है उसके मुताबिक हम जो है वो रीडिंग की टेक्निक जो है उसको अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. So we read differently in different situations. The technique we choose depends on the purpose of reading. For example, you might be reading for enjoyment, कि आप enjoyment के लिए पढ़ सकते हैं.
to get information or to complete a course related task, you need to adjust your reading speed and technique depending on your purpose. Novel, textbooks, manuals, magazines, newspaper, letters and web pages are just a few things that people read every day. Effective and efficient readers learn to use many styles of reading for different purposes के मुख्तलिफ मकासद के लिए जो मुख्तलिफ अंदाज हैं रीडिंग के उनको हम इख्तियार कर सकते हैं. In this section the writer has tried to give you an idea about skimming and scanning. Skimming और scanning के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है. ठीक है. Skimming is a fast reading technique that helps us to quickly identify the main idea of a text. Skimming एक ऐसी टेक्निक है रीडिंग की कि जो कि हमें हमारी मदद करती है, हमें मदद फराहम करती है टू क्विकली आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट. मेन आइडिया के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए, हमें जानने के लिए कि इसके अंदर क्या बात की गई है. ठीक है. People often skim when they have lots of material to read in a limited time. कि लोग स्किमिंग उस वक्त करते हैं, स्किमिंग की टेक्निक उस वक्त अपनाते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल खंगालना होता है. ठीक है. When you read the newspaper, you are probably not reading it word by word. You are actually skimming. And if you like something to read, then you read it in detail. Skimming is used to obtain the gist or overall sense of a piece of text. ओवरऑल आइडिया जो है वो हासिल करने के लिए हम स्किमिंग की टेक्निक जो है उसको अपनाते हैं. फॉर एग्जांपल, we skim to get the gist of the page of textbook to decide whether it is useful or and should therefore be read more slowly and in more detail. In the forthcoming exercise, we will see that skimming involves running our eyes over pages, over a passage to find out roughly what the passage is about. To get the general gist of the passage, skimming is reading technique that can help you to. Skimming की जो reading technique है ये आपकी मदद कर सकती है in two ways. नंबर 1 पे टू मोर क्विकली टू ऑब्टेन द जिस्ट ऑफ अ टेक्स्ट, एक मेन आइडिया हासिल करने के लिए जल्दी से, एंड डिसाइड इफ़ द टेक्स्ट इज़ इंटरेस्टिंग, और आप ये फैसला करने के लिए स्किमिंग करते हैं कि जनाब के आया इस मतलब कि टेक्स्ट में आपकी दिलचस्पी है या नहीं है. ठीक है. अब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर स्किमिंग करते हैं बट वी डू नॉट नो व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग इज़ कॉल्ड स्किमिंग. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अखबार लेते हैं तो आप अखबार में जो मेन हेडिंग होती है, सुर्खियाँ जिन्हें आप कहते हैं, आप उनको रीड करते हो. ठीक है. और जो खबर आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होती है उसको जो है वो आप डिटेल में पढ़ते हो. ठीक है. तो ये जो टेक्निक है जो आप अक्सर अपनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्किमिंग. देयर आर मैनी स्ट्रेटजीज कैन बी यूज व्हेन स्किमिंग. नंबर 1 पे रीड द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ के. अगर आप मज़मून की बात कर रहे हैं तो स्किमिंग की एक टेक्निक ये है कि आप जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ें. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर बताया गया होता है कि ये पूरी टेक्स्ट के अंदर क्या, इसका मौजू क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें डिस्कस होंगी, और जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर पूरे मजमून का खुलासा होता है. ठीक है. तो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ लें तो स्किमिंग आपकी हो जाती है. रीड दी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, टाइटल्स, सब टाइटल्स एंड इलस्ट्रेशंस. इसके अलावा एक और तरीकाकार है कि हेडिंग, सुर्खियाँ, उसके बाद जो है वो आपकी सब हेडिंग्स यानी कि छोटी सुर्खियाँ जो होती हैं, और जो इलस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल्स दी गई होती हैं उनमें से आप नज़र दौड़ाते हैं. तीसरा तरीकाकार जो है वो डेट्स, नेम्स और प्लेसेस को उस पर नज़र दौड़ाएँ. ठीक है. और चौथा तरीकाकार जो है वो है इलस्ट्रेशंस की, यानी कि अगर पिक्चर्स कोई दी गई हैं उन पे नज़र दौड़ाएं तो यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट स्किमिंग इज़. द सेकंड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग. Scanning is a technique
you often use when looking up a word in a dictionary. स्कैनिंग वो टेक्निक है कि जब आपको एक डिक्शनरी आप ओपन करते हैं और पूरी किताब में आपको एक वर्ड की तलाश होती है जिसका मीनिंग आपको चाहिए, तो आप जल्दी से उस पेज पर आते हैं, फिर आप वो वर्ड ढूंढते हैं और उसका मीनिंग देखकर आप किताब को बंद कर देते हैं, ठीक है। इन मोस्ट केसेस यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आंसर, कि आपके जहन में एक सवाल होता है और उस सवाल का आंसर आपको पता है कि ये जो किताब या ये जो पेजेस हैं इनके अंदर लिखा हुआ है, और उस जवाब को ढूंढने के लिए आप जल्दी जल्दी से नज़र दौड़ाते हैं और वो जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। स्कैनिंग इन्वॉल्व्स मूविंग योर आइज़ क्विकली डाउन द पेज सीकिंग स्पेसिफिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच यू एक्चुअली नीड, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। व्हेन स्कैनिंग लुक फॉर वर्ड्स that are bold, faced, italics or in different font size, style or color. Scanning means looking for specific piece of information in the text. स्कैनिंग का मतलब क्या है कि आप एक ख़ास जो है वो इन्फॉर्मेशन, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो कायदे-ए-आज़म के हवाले से जो है वो अगर मज़मून पढ़ रहे हैं तो आपसे जल्दी से किसी ने पूछ लिया कि जनाब कायदे-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप जल्दी से जो है वो नज़र मतलब दौड़ाना शुरू करेंगे। डेट्स को आप सिर्फ देखेंगे, जहाँ पे डेट आपको नज़र आएगी आप उसके इर्द गिर्द देखेंगे कि यहाँ पे बर्थ का जिक्र है तो पता चल जाएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ है। इस चीज़ को हम कहते हैं स्कैन करना। अच्छा, both these techniques, skimming and scanning, are fast reading skills which can be used on their own or in combination with each other, and they help you in gaining an overview of the material, separate the relevant and irrelevant material। कि ये जो techniques हैं ये आपकी help करती हैं separate करने में relevant और irrelevant material को, और एक overview और एक general idea हासिल करने के बारे में, ठीक है। स्कैनिंग आपकी हेल्प करती है टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्किमिंग आपकी हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम और द मेन आइडिया ऑफ अ टेक्स्ट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 11। 11वीं एक्सरसाइज है स्किमिंग फॉर द जिस्ट। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ इन द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नोटिस हाउ रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंसेस ऑफ ईच पैराग्राफ्स gives you good idea about the meaning of the text. As you read it, concentrate on these 3 questions and see if you find their answers. How many qualities of teachers are discussed? What is each quality? How the writer does contrast a good teacher with a bad one in the end. When personal qualities are desirable, what personal qualities are desirable in the teacher? तो अब हमें पता चल गया कि जनाब टीचर्स की क्वालिटीज़ के बारे में जो है वो इस पैराग्राफ में बात हो रही है, ठीक है। तो पहली क्वालिटी जो है, फर्स्ट द टीचर्स पर्सनैलिटी शुड बी प्लेजेंटली लाइव एंड अट्रैक्टिव, ये टीचर की पहली क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला सेंटेंस है जिसने हमें बता दिया। सेकेंडली, इट इज़ एसेंशियल फॉर टीचर टू हैव जेन्युइन सिंपैथी। सिंपैथी तक ही अगर आप यहाँ तक की पढ़ लें तो हमें पता चल जाता है कि ये एक अच्छे टीचर की दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए। Thirdly, I think it is absolutely essential for a teacher to be both intellectually and morally honest. ये एक टीचर की तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है, he should remain mentally alert. On the other hand, teacher must be capable of infinite patience. हौसला होना चाहिए। Finally, I think a teacher should have kind of mind which always wants to go on learning, के जहन ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमेशा लर्निंग को सपोर्ट करे। The ideal teacher turned out to be someone who was enthusiastic about a subject, a good, clear communicator who encourages the discussion, ठीक है। तो ये आइडियल टीचर की क्वालिटीज़ हैं। अब अगर आपने कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो बैड टीचर अकॉर्डिंग टू द सर्वे डिक्टेट्स नोट्स एंड अलाउज नो रूम फॉर डिस्कशन, कि वो नोट्स से आपको जो है वो डिक्टेट करते हैं, लिखवा देते हैं, और डिस्कशन जो होती है उसके लिए कोई रूम जो है वो नहीं छोड़ते, ठीक है।
और वो अनइंटरेस्टेड होते हैं, नॉलेज उनके पास इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर है। तो ऐसे आपने देखा कि जब आप इसकी पहली लाइन जो है हर एक पैराग्राफ की पढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे आपको आइडिया होता जा रहा है कि पूरे मजमून के अंदर हमें पता चल गया कि जनाब एक आइडियल टीचर जो है उसकी मतलब क्वालिटीज़ के बारे में बात की गई है, और आखिरी पैराग्राफ में आइडियल टीचर को एक जो है वो बैड टीचर के साथ उसका कंपैरिजन किया गया, ठीक है। Scanning for specific information, read the text quickly and fill in the table. What do the numbers given in the table refer to? इस टेक्स्ट को आपने पढ़ना है, ठीक है, और इसमें आपने देखना है कि जनाब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ऊपर, उन नंबर्स का क्या रिलेशन है या उनका क्या मतलब है, ठीक है। तो यू कैन ओपन योर बुक्स 1%, 2%, 6%, 13, 16, 30, 3/4 और 86%, ठीक है। अब आपने जल्दी से देखना है कि जनाब 1% लिखा कहाँ पे है, ठीक है। सी इफ़ यू फाइंड 1%, ये यहाँ पे 1% लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 16% लिखा हुआ है, ठीक है। 2% और ये 1% जो है दे हैव एंगेज्ड इन रोल प्ले। उसके बाद यहाँ पे 13% की भी बात हो रही थी, ठीक है। 3/4 वहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपके सामने हो रही है एक्टिविटी, इसे हम क्या कहते हैं, टू स्कैन फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब आप देखें कि ये ऊपर का हमने सारा छोड़ दिया, ठीक है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, सीधा सीधा जहाँ पे हमारी ज़रूरत थी 1% भी निकाल लिया, 2% भी निकाल लिया, 13% भी निकाल लिया, 16% भी निकाल लिया, 3/4 भी निकाल लिया, 6% भी निकाल लिया। अब 86% रह गया, कहीं पे 86% आपको नज़र आ जाए, 86 देखें कहीं पे नज़र आ रहा है आपको, ये 86% नज़र आ गया, ठीक है। ये तो ये जो टेक्निक है कि अब हम वी हैवेंट मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो हमने अपने जो रेलिवेंट क्वेश्चंस थे उनके हमने आंसर्स ढूंढ लिए। तो इट मींस के ये जो एक्टिविटी है इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड इट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, कि मुतलका जो है जो वर्ड्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पूरे टेक्स्ट में से ढूंढना। अगर आप इसको रीडिंग करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से आपको 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन हमने विद इन लेस दैन 2 मिनट्स जो है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो हमने अंडरलाइन कर लिए हैं, ठीक है। तो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, स्कैन करना और मुतलका इन्फॉर्मेशन को ढूंढना। ऊपर जो हमने हर मजमून की एक एक लाइन पढ़ी थी वो होती है स्किमिंग, कि टेक्स्ट का ओवरऑल आइडिया हासिल करना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, या फिर हर पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ने के बाद आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है। जी नाउ वी हैव एक्सरसाइज नंबर 13, सर्वे द टेक्स्ट इन डिटेल। अब यहाँ पे जो है वो आपने स्किम करना है टेक्स्ट को, ठीक है, नज़र उस पर मतलब दौड़ानी है। रीड क्लोजली द डिफरेंट पेजेस एंड एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई देम एज विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन, राइट येस और नो। तो हम जो है वो पेज एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट्स अबाउट द ऑथर, ब्लर्ब, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, detail about the author, edition, foreword, index, list of contents, list of references, place of publication, preface, publisher, ठीक है। इसका टाइटल दिया गया है, राइटर का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ये यहाँ पे पब्लिशर का नाम दिया गया है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, टोरंटो, ठीक है। तो हमारे पास पब्लिशर का नेम यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। After that, Oxford University Press, Glasgow, Melbourne, Cape Town, Nairobi। जगहों के नाम है, फर्स्ट एडिशन, रीप्रिंटेड, प्रिंटेड इन ग्रेट एडिशंस और रीप्रिंट्स के बारे में भी हमें बताया गया है, ठीक है। तो एडिशन के बारे में हमें पता चल जाता है, ठीक है। ऑथर की डिटेल्स हैं, हमें पता है कि ऑथर ये इसका कौन है। पब्लिशर का हमें पता है कि जनाब
ये है प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का, हमें पता है कि इसकी क्या है, ठीक है। नाउ वी विल मूव नेक्स्ट, आगे क्या है इसमें, ये थर्ड पेज था इसका, इसमें प्रीफेस दिया गया है, ठीक है, प्रीफेस है फोर्थ पेज पे। प्रीफेस के बाद एक्नॉलेजमेंट्स हैं, एक्नॉलेजमेंट का पेज है, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट एंड कंटेंट्स, ठीक है। और ये रेफरेंसेस हैं और इंडेक्स है, ठीक है। प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, कंटेंट्स, बिब्लियोग्राफी और इंडेक्स, ये अब सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। तो यहाँ पे हम यस लिखते जाएंगे जो जो चीज़ें हमें मिली। एक्नॉलेजमेंट्स हैं, अपेंडिसेस हैं, अबाउट द ऑथर का हमें पता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन का हमें पता है, एब्स्ट्रैक्ट पता नहीं है या नहीं है, आई फॉरगॉट, फॉरवर्ड है, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस मौजूद है, इंडेक्स जो है वो भी मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे जो है वो इन्फॉर्मेशन आपने प्रीफेस देखना है कि प्रीफेस, ये यहाँ पे प्रीफेस भी दिया गया है पेज नंबर 4 के ऊपर, तो प्रीफेस भी है, प्रीफेस को भी हम यस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है यू स्कैन फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, ठीक है जी। ये स्कैनिंग की सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज थी कि वी वर लुकिंग फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। Section D is writing, and in writing again we have letter writing, and in letter writing we will be learning how to write a letter of advice or how to letter that gives advice, okay. So now move on to next page please. In unit number 2 and unit number 3 you have already learned how to write informal letters. You have learned writing letter of apology, and in the listening section of unit 3 you have also learned how to give advices to the people. In this unit you will be learning how to write letters that give advice. A letter of advice can have a very powerful effect, कि इसका जो है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत किस्म का असर हो सकता है. An advice written in a letter form becomes valuable piece because the written words has a motivational power than casual comments or even serious verbal suggestions. कि जो आपकी ज़बानी गुफ्तगू होती है उसकी निस्बत जो वो ज़्यादा पावरफुल होती है. उसकी रीज़न ये है कि वो जो रिटन आपके कमेंट्स हैं एक तो वो उसके पास होंगे और जिस बंदे को भी आप एडवाइस कर रहे हैं एंड ही कैन रीड देम अगेन एंड अगेन. सो देयरफॉर you should, whenever you are writing a letter of advice, you should be very careful in choosing the words, and they can be very useful in motivating the readers to achieve the goal, give up the harmful habits, try something new, strive for even greater accomplishments or success, and so on. While writing the letters of advice, use professional words, phrases and sentences. Wording is everything. Tactful, warm and genuinely written letters of advice help build strong relationship. के अल्फाज जो हैं उनका इंतखाब आपने बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि जो आपके अल्फाज हैं वो आपके रिलेशन को बना भी सकते हैं और आपके रिलेशन को बिगाड़ भी सकते हैं. तो whenever you are writing लेटर ऑफ एडवाइस, ट्राई टू बी वार्म, के जो लैंग्वेज है उसके अंदर फीलिंग्स और उसके अंदर जज्बात जो है वो
रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और नाउ देयर आर सम टिप्स फॉर राइटिंग द लेटर ऑफ एडवाइस। रिस्पॉन्ड quickly to the request for advice. Give yourself time to think your answer thorough carefully, but let the person know that you care about him or her and the situation by sending your reply within few days of receiving the request। कि जब भी कोई बंदा आपको रिक्वेस्ट भेजता है, आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप जो है उसको एडवाइस करें, तो डू नॉट वेस्ट टाइम। जैसे ही आपको लेटर रिसीव होता है एंड वेन एवर यू हैव द फ्री टाइम, you should write the reply at that very moment, okay? The second tip for writing the letter of advice is, no matter how you may feel personally about the subject you are asked to give advice on or the person who asked for it, keep the tone respectful in all cases. The tone of this letter should be helpful and congenial। कि जो आपका लहजा है वो हेल्पफुल किस्म का लहजा होना चाहिए। तनकीदी लहजा जो है या इस लहजे में बात करना इन योर लेटर विल नॉट हैव अ गुड इम्पैक्ट अपॉन द रीडर। देयरफॉर you should be objective and considerate and helpful while giving advice to somebody. The next tip for writing a good letter of advice is, be careful of appearing judgmental। कि जजमेंटल दिखाई ना दें, कि आप जो है वो जज ना करें। जजमेंटल हम लोग जो है वैसे एज अ नेशन हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं, ठीक है, कि हम जो है फ़ौरन जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारी ज़ाती राय होती है और इसको अपनी ज़ात तक ही महदूद रखना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट और इम्प्लाइड क्रिटिसिज्म, की तनकीद ना करें अगले बंदे के ऊपर। अवॉइड कमेंट्स और एक्सप्रेशंस ऑफ द पर्सनल ओपिनियन, की ज़ाती राय जो है उसको भी एक्सप्रेस करने की कोशिश मत करें। इफ़ यू कैनॉट गिव एडवाइस एक्सप्रेस योर रिग्रेट, कि अगर आप जो है वो एडवाइस यानी कि अच्छा मशवरा नहीं दे सकते तो एक्सप्रेस योर रिग्रेट यानी कि आप जो है मदरत कर लें। सजेस्ट दैट समवन एल्स वुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू डू सो। If the topic is sensitive one, consider your approach carefully। कि अगर जो है वो टॉपिक ऐसा है जो कि आपके दायरा इल्म से बाहर है तो आप जो है वो सिंपली मदद कर लें और अगले बंदे को मशवरा दें कि वो किसी और से एडवाइस इस बारे में ले लें। The next point is that you should avoid strong language that might discourage your reader। Next point is, give advice only on the subject you have been asked about। Keep your advice simple and to the point। कि सादा से अल्फाज में जो है वो एडवाइस दें और टू द पॉइंट यानी कि उसके अंदर डाइग्रेशंस जो हैं वो ना हों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ समवन टेक्स योर एडवाइस मेंटेन अ टोन ऑफ appreciation without any hint of feeling of superiority। कि अगर कोई आपकी एडवाइस ले लेता है, ठीक है, उस पर अमल करता है, तो आप अपने आप को अपने अंदर जो है वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स जो है उसका शिकार ना हो जाएं, बल्कि जो आपका नॉर्मल एटीट्यूड है उसी को बरकरार रखें। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू आर द वन सीकिंग एडवाइस, लुक टू पीपल you know you can rely on। They should be worthy of your trust and be willing to keep your request confidential। कि अगर आपको खुद जो है वो एडवाइस की ज़रूरत है तो ऐसे लोगों से मशवरा करें कि जिन पे आपको एतबार है और जिनको आप ये समझते हैं कि वो आपको जो है वो अच्छा मशवरा देंगे और आपकी इस बात को छुपा के रखेंगे। When someone responds to your request for advice, it is always good idea to write a thank you letter और लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। कि अगर कोई बंदा आपकी जो एडवाइस की रिक्वेस्ट है उसका रिस्पांस आपको देता है तो ये अच्छी बात है कि आप उनका शुक्रिया अदा करें या फिर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उनको लिखें। रीड दिस लेटर ऑफ एडवाइस BA फंक्शनल इंग्लिश। स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड दिस लेटर फ्रॉम देयर ट्यूटर
who advises them about how to study and be successful in this course. ठीक है, तो this is the letter of advice. Dear students, hello and welcome to the spring semester of functional English. As your tutor, I believe that I have a wealth of information to share with you, and I hope that you may benefit from my knowledge and experience. Although being an AIOU student allows you a great deal of freedom, but with this freedom comes a great deal of responsibility. If you are a self-motivated person, then this class is for you and success will follow. The most important aspect of this class is communication with your classmates and with the instructor or the tutor in the tutorial meetings via email. I strongly suggest that you should attend the tutorials, because if you have questions about any assignment or a unit, you can ask your classmates and the tutor to help you. Keep in mind that being an AIOU student may be a new experience for you, but I recommend that keep the communication open with everyone in the tutorial sessions, as it will help you to build the working relationship with everyone in the class. जी आगे इस लेटर को आप जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लें and give me a break of 2 minutes. I'll be back with you in a jiffy. Okay, I hope you have read this letter. Now please move on to next page. There are following suggestions given by the tutor that can help you succeed in this course. Be prepared to devote a minimum of 10 hours each week. Do not get behind on assignments. Keep current. Do not be afraid to ask for help. Use the audio cassettes. It's fun and very helpful. The activities on the audio are a nice break from the textbook. Consider purchasing a nice dictionary and a grammar book. Type your assignments on computer, because not only are you studying English tools, you are also acquiring computer skills. Keep in mind this Chinese proverb: it is not what you know when you start, but what you learn and put to good use. ठीक है, इसके बाद जो है you have to write Mr. Umar gives valuable advice to his students. Write down advices that Mr. Farooq writes to his students. ठीक है, तो एडवाइसेस उसमें से आपने ढूंढनी है जो है. ठीक है, इसको छोड़ दें. Here is another letter of advice.
Dear lonely soul, your problem is very common one. Once upon a time, woman who stayed at home had nobody to talk to or to know what's happening around the world. Now with the internet, all kinds of people and information are coming right into your home any time of the day or night. The lure of internet is enormous, where setting curfews and insisting on supervision is out of the question. Remember, this is your wife, not a teenager you are dealing with. If you harass or threaten her, she will just go underground and do her computing when you are not around, and that's dangerous. My suggestion is a little unconventional, but it's worth a try. First, pay close attention to your own habits at home. How much time did you spend with your wife before the computer came to live with you? Chances are it was loneliness that drove her to seek companionship online. Second, buy another computer. It doesn't have to be fancy, just a basic model that is internet capable. If your wife asks why, just tell her you want your own, so there aren't conflicts with the usage. Now, when your wife sits down at the keyboard, go to your computer. Using whatever instant messaging program she uses, slowly engage her in conversation. At first, she may be slightly amused at her husband sending messages from across the room. Talk about anything you want, work, the kids. You can be romantic, funny, send cards via email, take an interesting and a different route to build a healthy, viable relationship again, without a need to throw out the computer. With a little cleverness and determination, you may find you have a much better marriage and a deeper understanding of each other. So try this and let me know if it worked. Then there is exercise number 18. If you have time, please solve it. Now we are going into section number E, that is listening. And in listening, we will be listening how to give advice to the people. ठीक है जी, हम सब को ज़िंदगी में किसी न किसी सिचुएशन या किसी न किसी पॉइंट पे जो है वो मशवरों की ज़रूरत होती है. जब हम नौजवान होते हैं तो हमें हमारे वालिदैन जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एडवाइस यानी कि नसीहतें करते हैं कि हमें जो है वो कैसे खाना चाहिए, कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, लिबास कैसा पहनना चाहिए, बिहेवियर यानी कि हमारा रवैया कैसा होना चाहिए. हर चीज़ पे जो है वो हमें नसीहत मिलती है. और जब हम स्कूल या मतलब के कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पे टीचर्स और जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमें एडवाइस करते हैं कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स में आगे पढ़ना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. इसी तरह जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि जनाब के प्रोफेशनल जो लाइफ है उसके अंदर जो है वो कैसे गुजारा करना है और हाउ इज़ इट दैट वी आर टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस के मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में हमें अपने आप को हैंडल कैसे करना है. ठीक है, अब नीचे डायलॉग के अंदर आपको एक जो है वो सिचुएशन दी जा रही है. डॉक्टर हसन हैज़ अ पेशेंट सईद हु इज़ अ chronic smoker. Let us listen to the conversation between the two and notice how Dr. Hassan advises Saeed to quit smoking. डॉक्टर हसन साहब हैं, उनके पेशेंट हैं सईद साहब जो कि बहुत ही सख्त किस्म के स्मोकर हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं. अब आपने देखना है कि कैसे डॉक्टर हसन सईद साहब को मशवरा देते हैं कि वो स्मोकिंग से अपनी जान कैसे छुड़ा सकते हैं. तो ये इनका डायलॉग है. लेट अस रीड इट आउट. डॉक्टर हसन, नाउ सईद, आई सी दैट यू स्मोक रादर हैवीली. सईद, यस, आई एम अफ्रेड आई डू स्मोक टू मच. डॉक्टर हसन, वेल, माई एडवाइस इज stop smoking at once or you will damage your lungs and might end up with a heart disease. Have you ever tried giving up? Said, yes, several times, but I just find it too difficult. Dr. Hassan, in that case, let me suggest few things you can do.
Firstly, if you smoke strong cigarettes, you should change to milder ones. Said, okay. Dr. Hassan, you should also conscientiously try to reduce the number of cigarettes you smoke each day. Don't smoke the whole cigarette. Put out the cigarette after you have smoked half of it, right? Said, I'll try, doctor, although it may be difficult. Dr. Hassan, also get a nicotine gum from a medical store, and whenever you feel an urge to smoke, you start chewing a gum. कि ये डिफरेंट मशवरे हैं जो कि डॉक्टर साहब ने सईद साहब को दिए हैं, और इन मशवरों की मदद से सईद साहब जो है उनकी स्मोकिंग इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको रिड्यूस किया जा सकता है. ठीक है. What did the doctor say? Here are the doctor's advices to the Saeed. Each sentence is in the indirect speech. डॉक्टर ने क्या क्या एडवाइस किया जी? डॉक्टर ने एडवाइस किया, एडवाइज्ड मिस्टर सईद टू गिव अप स्मोकिंग. नंबर 2, he directed Said to change to milder cigarettes. Number 3, he recommended reducing the number of cigarettes. And number 4, he consoled him not to smoke the whole cigarette. He counseled him not to smoke the whole cigarette. Now there is exercise number 19 for you. Now rewrite the following short advices into complete sentences. Use different words of advice as given in the bold in the above sentences. Stop eating too many sweets. The doctor advised me to stop eating too many sweets. Please do not drive fast. तो इसमें do not drive fast, इसमें हम कह सकते हैं कि I directed him not to drive fast. ठीक है. Concentrate on your studies. My parents advised me to concentrate on my studies. Do not skip your breakfast. I was advised not to skip my breakfast. Take long walks. I was suggested to take long walks to reduce weight. मतलब कि ऐसे आपने कंप्लीट चूँकि सेंटेंसेस बनाने थे तो मैंने डिफरेंट सिचुएशंस अपने आप से जनरेट किए. अच्छा जी, नेक्स्ट है इसके बाद. गुलफराज हैज़ जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम अ लॉन्ग ट्रिप. ही इज़ टॉकिंग टू हिज वाइफ आमना. लिसन टू देयर कन्वर्सेशन एंड नोटिस हाउ आमना गिव्स हर हस्बैंड एडवाइस. ठीक है. Gulfraz, I feel absolutely exhausted. Amna, you should get some rest. Why don't you lie down for some time? Gulfraz, I haven't eaten anything for 24 hours. Amna, you must have a decent meal first. I'll get you some hot rotis and vegetables at once. Gulfraz, I haven't had a bath for 2 days. Amna, you ought to have one right now. Meanwhile, I get the food ready. Gulfraz, I also feel a bit sick. I suggest I have a sore throat. Amna, oh dear, I think you should start taking medicines. Gulfraz, but I want to attend Ashwani's dinner tonight. Amna, you must be joking. All you need is quiet evening and good rest. You have to relax. Gulfraz, but I promised him I would come. Well, if I were you, I would call him and excuse myself. I don't think I will let you go out tonight. अच्छा जी, there are number of ways of giving advice in English. Here are some of the most common ways. You should get some rest. You must. You ought. I think. You should. You have to relax. ठीक है. तो ये चंद वेज जो हैं एडवाइस देने के, ये ऊपर डायलॉग से हमें पता चले हैं. तो you should note these down and use them in your real life situations. कि जब कभी भी आपसे कोई बंदा एडवाइस मांगता है तो इस किस्म के अल्फाज जो हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. and you can use them to give advice to the one who needs it. Okay.
When we give advice, we use words like should, must, and ought. We sometimes also use really and strongly to give emphasis. For example, I really think you should get some rest. You really should have a decent meal. I strongly think that you should start taking medicines. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडवाइस के अंदर ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें really और strongly है. Again, there is पैराग्राफ. इसको आप जो है वो 2-3 मिनट्स में रीडिंग करें, और जो एडवाइस के वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं उनको आप जो है वो अंडरलाइन करें. ठीक है, ये डायलॉग है, सॉरी पैराग्राफ है. इसको रीडिंग करें, और जो इसमें आपको एडवाइस के एक्सप्रेशंस मिलते हैं उनको आप अंडरलाइन करते जाएं. नंबर 1 पे तो ये है. ठीक है, बाकी जो है वो उनको आप खुद अब देखें और उनको अंडरलाइन करते चले जाएं. ठीक है बेटा, जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड डू इट. Okay, I hope that you have read it and you have underlined the expressions of advice. Okay, this is exercise number 20. What advice did Dr. Hafiz give to the students who are getting ready for exams? Follow the example and then write all what Dr. Hafiz said in indirect speech. ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का आपने इस्तेमाल करना है, और जो जो एडवाइसेस दी गई हैं उन एडवाइसेस को आपने नोट डाउन यहाँ पे करना है. ठीक है, then there is this exercise number 21. Then there is this recorded text number 28 by Razia Wasim. It is also full of advices. You should read it and underline the given advices. और फिर उसी पैटर्न पे आपने जो एक्सरसाइज नंबर 23 है इसको आपने कंप्लीट करना है. सो दैट इज़ एंड ऑफ यूनिट नंबर 4. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 के हम जो है वो इंशाल्लाह
पहले 2 सेक्शन आज के दिन में कंप्लीट करेंगे. So here is unit number 5. Again, unit number 5 has been divided into 5 sections. The first section is function, the function of language, and in this section of this unit we will be learning about expressing certainty and uncertainty and expressing obligation. कि यकीनी या गैर यकीनी की सिचुएशन या फिर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है फरीज़ा. ठीक है, ये फंक्शंस जो हैं ये बिल्कुल मिलते जुलते फंक्शन हैं टू दोज के जो इनको आपने सीखा था पिछले यूनिट में, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है, पॉसिबिलिटी को जो है वो हम सर्टेनिटी कह सकते हैं और इम्पॉसिबिलिटी को हम अनसर्टेनिटी कह सकते हैं. ठीक है, इस यूनिट में जो है वो फर्दर मज़ीद जो है प्रैक्टिस है आपके पास इस चीज़ की. You are going to listen to an interview of the finance minister who is answering question about the current year's budget. As you listen to his interview, notice how he is expressing certainty about the success of the government's economic policies. Interviewer: Mr. Minister, how would you comment on this year's budget? Minister: well, of course, I have all the positive comments to make. I will say with this certainty that overall this budget is positive, export oriented and business friendly. I am absolutely sure that this budget has been welcomed by all communities, especially the business community, who has termed it as an investor friendly budget. Above all, the most satisfying point is that whatever recommendations we had given have been approved 100%. Interviewer: can you highlight some of the prominent features of the budget? Minister: it's definitely people friendly budget that will surely give a boost to the national economy. It is certainly very good from the agricultural point of view, and it is especially good for textile industry. This year's budget clearly indicates a cut in taxes, an unquestionable record increase in development. So I say this with confidence that we will for sure achieve a targeted GDP growth of 6 to 8%. In this dialogue you अब इसमें आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि सर्टेनिटी यानी कि 100% यकीन दहानी की बात जो है उसमें हो रही है. तो नीचे जो है वो उनकी रेपिटेशन है जिसमें सर्टेनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वेल ऑफ कोर्स का एक्सप्रेशन आया है. उसके बाद आई विल से दिस विद सर्टेनिटी, आई एम एब्सोल्युटली श्योर, इट्स एन एब्सोल्यूट सक्सेस, हैव बीन 100% अप्रूव्ड. ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं ये सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. इसके अलावा ये नीचे इट्स डेफिनेटली अ पीपल फ्रेंडली बजट, विल श्योरली गिव अ बूस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस दे आर expressions of certainty and they tell us about certainty of the mindset of the person who is using these expressions. बाकी जो नीचे जिनको मैंने रीडिंग नहीं दी उनको आप खुद रीडिंग दे लें. It is especially good for textile industry and so on. Okay जी, there are different ways of expressing certainty. It is definitely going to rain. जैसे ये definitely का वर्ड आ गया. ठीक है, तो definitely का वर्ड जो है ये 100% certainty की 100% जब आप यकीन होता है कि कुछ होगा उस वक्त आप यूज़ करते हैं. ठीक है, बट इफ़ वी से इट माइट रेन, अगर हम ये कहें कि इट माइट रेन तो यहाँ पे भी सर्टेनिटी है लेकिन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जो है वो 50% है कि 50% चांसेस हैं हो सकता है कि बारिश हो जाए. ठीक है, वी आर एक्सप्रेसिंग
chances. So let us review different degrees of certainty. Read इसकी different जो है वो degrees हैं, ठीक है. और ये नीचे चार्ट एक दिया गया है आपको, ठीक है. सर्टेनिटी 100% और डाउट जो है वो वहाँ पे इसका 0% होता है, ठीक है. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू रेन. डेफिनेटली जो है इट एक्सप्रेसेस 100% सर्टेनिटी. लुक इट्स गोइंग टू रेन, ये उससे थोड़ी सी लेस है. इट विल श्योरली रेन दिस आफ्टरनून. ये बिल्कुल 100% सर्टेनिटी की उसमें रेंज में आता है. आई थिंक इट विल रेन, आई डोंट थिंक इट विल रेन, आई थिंक इट विल रेन. ये 100% से आप कह लें कि ये 70% है. आई डोंट थिंक इट विल रेन, ये जो है अब आप नीचे की जानिब डाउट की जानिब आ रहे हैं, शक की जानिब, ठीक है. तो ये आप ज़ीरो की जानिब यू आर ऑल मूविंग स्लोली. इट विल प्रोबेबली या मे या माइट रेन. इट प्रोबेबली वॉन्ट या मे या माइट रेन. इट डेफिनेटली वॉन्ट रेन. डेफिनेटली वॉन्ट रेन जब आप कहेंगे तो ये 100% डाउट है कि बिल्कुल बारिश नहीं होगी, ठीक है. ऊपर वाले 3 एक्सप्रेशन हैं ये 25 to 30% पॉसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. उससे ऊपर जो है वो 70% है और उससे ऊपर जो है वो 100% सर्टेनिटी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है बाय दोज वर्ड्स. ओके, now let us move on to next page. Using appropriate language is very important when we need to express certainty or uncertainty. Read this chart that gives you what kind of words you can use. ठीक है कि अगर आपको 100% यकीन है, मुकम्मल यकीन है कि कुछ मतलब कि काम ऐसा होने जा रहा है, तो उसमें आप इन वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 1 पे सर्टनली, नंबर 2 पे डेफिनेटली, नंबर 3 पे क्लियरली और नंबर 4 पे अनडाउटेडली. जहाँ पे आपको लगे कि हो सकता है कि हो जाए, मतलब कि 60 to 70% प्रोबेबिलिटी आपको लगे, तो वहाँ पे आप जो है प्रोबेबल और प्रिज्यूमेबली ये 2 वर्ड्स जो हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ पे आपको लगे कि यार 50% चांस है, तो वहाँ पे लाइकली और अनलाइकली या पॉसिबली या फिर परहैप्स, ये वर्ड्स जो हैं इनको आप इस्तेमाल करेंगे सर्टेनिटी की डिग्री को रिफ्लेक्ट करने के लिए. रीड दी सेंटेंसेस बिलो एंड देन डिसाइड व्हाट डिग्री ऑफ सर्टेनिटी इज एक्सप्रेस्ड. कंसल्ट दी अबव चार्ट. तो इस चार्ट को आपने देखना है कंप्लीट, स्ट्रॉन्ग, लेस स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि जो वर्ड्स जो कि हाईलाइटेड हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है. प्रोबेबली का वर्ड फर्स्ट में यूज़ हुआ है तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग. ऑलमोस्ट सर्टनली का वर्ड यूज़ हुआ है. ऑलमोस्ट सर्टनली का मतलब जो है ये भी स्ट्रॉन्ग में आएगा. प्रिज्यूमेबली जो है ये भी स्ट्रॉन्ग में आएगा. परहैप्स जो है इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग. पॉसिबल जो है इट इज़ आल्सो लेस स्ट्रॉन्ग. डेफिनेटली, सर्टनली जो है ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइकली जो है इट इज़ लेस स्ट्रॉन्ग. अनडाउटेडली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. पॉसिबल जो है इट इज़ आल्सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लेस स्ट्रॉन्ग, सॉरी. Now you are going to listen to an ordinary citizen, Ali Aman, giving his comments on the budget. Notice his tone and the way he is giving his observations on the budget. ठीक है, अली अहमद साहब हैं जी, इनका डायलॉग है. इसको आप जो है वो रीड आउट करें और इसमें जो एक्सप्रेशन है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के, इनको आपने अंडरलाइन करते जाना है.
जी जो इसके अंदर एक्सप्रेशंस है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब आप जो है वो इनका जायज़ा ले लें, ठीक है, कि इसमें अनसर्टेनिटी की बातें जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो अनसर्टेनिटी पे बेस करते हैं। Now there is exercise number 2. Listen to the recorded text 30 again, in which Ahmed Ali expresses uncertainties or doubt. Write down the specific words that he uses to express uncertainties. ठीक है, तो uncertainty को express करने के लिए ये सारे words जो हैं ये मैंने underline कर दिए हैं. All you need to do is you have to write them down here. After that we have exercise number 3. Please look at exercise number 3. Read the following sentences and identify the words that express certainty. In fact we have some in fact का जो word है यही certainty को reflect कर रहा है. Without doubt, this word reflects certainty. You can be sure that we will finance your education in Britain. You can be sure, और we will का जो word है ये भी certainty को reflect करता है. Surely there are immediate, surely का word जो है it expresses certainty. There is a definite shift in the foreign policy. Definite का word जो है it expresses certainty, ठीक है. इसके बाद पैराग्राफ है, इसको रीड करना है. लीव इट, छोड़ दें इसको, ठीक है. लिसन टू दिस वेदर फोरकास्ट बाय मोहम्मद हनीफ. ठीक है, मोहम्मद हनीफ की जो फोरकास्ट है उसके अंदर से आपने सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको चेक करना है. एब्सोल्युटली का वर्ड आया. मोस्ट प्रोबेबली, most likely, might, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 4 इसी पे बेस करती है. उसके बाद है जी ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लर्न अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेशन. द एक्ट ऑफ बाइंडिंग वन सेल्फ बाय अ सोशल और लीगल और मॉरल टाई. के समाजी फरीज़ा या फिर जो है वो मतलब कानूनी फरीज़ा या फिर अखलाकी फरीज़ा जो है उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेशन कहते हैं, ठीक है. Some similar words that mean the same as the word obligation are commitment, duty, need, responsibility, liability, ठीक है. You are going to listen to Dr. Hafiz's lecture in which he is telling us about the responsibilities or obligations of good citizens. Since it is longer lecture, you have to listen it carefully and perhaps more than once. Listen to what he has to say. जी ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है. जो एक मतलब गुड सिटीज़न है उसकी क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं. एक ये मस्ट अबाइड का वर्ड आ गया, ठीक है. अबाइड बाय ये जो है ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है.
ये वी नीड टू डिस्प्ले सर्टन लेवल ऑफ सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी टाइप के जितने एक्सप्रेशंस हैं और ये सारे जो है ऑब्लिगेशन को, जो एक्सप्रेशंस जिनका इस्तेमाल किया गया है ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, वो सारे ये आपके नीचे पॉइंट्स की फॉर्म में दिए गए हैं। प्लीज़ इन एक्सप्रेशंस को एक दफ़ा रीड आउट कर लें जल्दी से, क्योंकि टाइम अब हमारे पास थोड़ा है और एक और सेक्शन जो है अभी वो हमने उसमें से गो थ्रू करना है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। व्हाट अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज डू यू थिंक इफ वी वांट टू बी अ गुड सिटीजन। बस इसको छोड़ें, प्लीज़ मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। Structure, and in structure we will be talking about active voice and passive voice। ठीक है, सेक्शन बी है यूनिट नंबर 5, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस है उसके अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट जो होता है वो जुमले का एक किसी शख्स का नाम होता है या कोई प्रोनाउन होता है कि जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, वर्ब वो हिस्सा होता है, या सब्जेक्ट के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि जो कि एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, जो बंदा एक्शन कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करता है। और उसके बाद होता है जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इसमें द डॉग जो है, जो बोल्ड है, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है क्योंकि ये एक्टिवली एक्शन कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है बिट, ये है वर्ब। ठीक है, ये एक्शन है कि जो डॉग ने किया है। अब द बॉय जो है ये बिल्कुल मतलब कि पैसिव है कि लड़का खड़ा था, ये लड़का जा रहा था, डॉग ने आके उसको काट लिया। तो इसमें अब लड़के का जो रोल है वो बिल्कुल थोड़ा सा है कि लड़के का कोई ज़्यादा जो है कि किरदार इसके अंदर नहीं है। ठीक है, वो एक्शन का रिसीवर है, उसको एक्शन उसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने के लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट वो नाउन जो कि एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है और एक एक्शन को सरअंजाम दे रहा होता है, ये मेन एक्टर होता है जुमले का। ठीक है, एक्टिव वॉइस हैज़ अ वर्ब विद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस के जुमले होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। द पैटर्न इज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो इंग्लिश लैंग्वेज का पैटर्न है नॉर्मली वो एक्टिव वॉइस का पैटर्न है, और वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे ही दूसरे जुमले में अगर आप देखें तो आयशा जो है इट इज़ द सब्जेक्ट,
will give a presentation on her research project at the seminar. Aisha will give, she will give what, she will give a presentation. ठीक है, तो presentation जो है ये इसमें object है और will give जो है ये verb है. ठीक है, अब आगे जो है वो presentation की explanation है कि किस टाइप की presentation दी जा रही है. ठीक है, नेक्स्ट जुमले में आप देखें तो scientists जो है it is the subject, have carried out, what have they carried out, they have carried out experiments. experiments is also a noun. ये बात याद रखें कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा नाउन होते हैं और एक्टिव वॉइस में इनकी पोजीशन को चेंज किया जाता है. ठीक है, इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट और द एक्टर बिकम्स secondary and emphasis is on the action. Therefore, the focus of the sentence is on the object rather than the subject. A passive voice verb consists of a form of verb be plus a past participle. ठीक है, past participle होता है इसमें. Often passive voice sentences will contain a by phrase के by लगाया जाता है उसमें. ठीक है, इंडिकेटिंग हु और व्हाट परफॉर्म दी एक्शन, के एक्शन किसने परफॉर्म किया. वही जुमले जो ऊपर थे कि द डॉग बिट द बॉय. ठीक है, तो उसको जब हम जो है पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो फोकस जो है वो चेंज हो जाएगा. द बॉय वाज बिटन बाय द डॉग, कि जो लड़का है उसके ऊपर एक्शन हुआ है. ठीक है, तो उसको थोड़ी सी अब इस जुमले में इम्पोर्टेंस मिल रही है. द बॉय वाज बिटन बाय द डॉग. रिसर्च प्रेजेंटेशंस विल बी गिवन बाय आयशा एट द सेमिनार. ठीक है, तो आयशा जो है वो अब सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट बन चुकी है. एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो था वो सब्जेक्ट की पोजीशन से मूव करके, सॉरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन से मूव करके सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया है. ठीक है, और नीचे जो है वो एग्जांपल्स हैं और एग्जांपल्स आपको बता रही हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वीटोड द कमिटीज़ रिकमेंडेशंस. तो द कमिटीज़ रिकमेंडेशंस जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा. वीटो ओड लिखा हुआ है, ईडी है तो मतलब कि पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे वाज पास्ट टेंस का वर्ब लग जाएगा. वीटोड वीटोड ही रहेगा. बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि शुरू में था वो आखिर में चला गया. ठीक है, सिमिलरली द लीडर्स आर सीकिंग ए फेयर रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस. तो अ फेयर रेजोल्यूशन इज ऑब्जेक्ट. अ फेयर रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस इज, चूँकि प्रेजेंट टेंस है तो अब जो है वो रेजोल्यूशन, फेयर रेजोल्यूशन चूँकि सिंगुलर है तो ये आर की जगह पे इज़ हो जाएगा. बीइंग सॉट बाय होम, बाय द लीडर्स. साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ट्रेसेस ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ मार्स. तो ऐसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा. ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मार्स बाय द साइंटिस्ट. Action on the bill is being considered by the committee. The committee is considering action on the bill. Most of the class is reading the book. The book is being read by most of the class. The researchers will publish their results in the next issue of the journal. Results will be published by the researchers in the next issue of the journal. ठीक है, while active voice helps to create clear and direct sentences, sometimes writers find that using an indirect expression is effective in some situations, so they choose passive voice. The passive voice is effective in those circumstances when the writer wants to highlight the action rather than the agent performing the action. So there are sometimes good reasons to use the passive voice. कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में होता है जब आपने जो एक्शन है उसको ज़्यादा अहमियत देनी हो, बजाय इसके जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है
उसकी जगह पे जब आपने एक्शन इटसेल्फ को अहमियत ज़्यादा देनी हो तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन में आप जो है वो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आगे इसके यूजेस और एग्जांपल्स दी गई हैं, टू एम्फेसाइज एक्शन रादर देन एन एक्टर, आफ्टर लॉन्ग डिबेट द प्रपोजल वाज एंडोर्स्ड बाय द प्लानिंग कमेटी, to be tactful by not naming the actor, the procedures were somehow misinterpreted to describe a condition in which the actor is unknown or unimportant. Every year, thousands of people are diagnosed as having cancer. To create an authoritative tone, ठीक है। Visitors are not allowed after 9 p.m. जी अब क्वेश्चन है कि whenever we are writing, so which voice should we use? Should we use active voice or should we use passive voice? Active voice is the best and suitable in informal and personal and non-scientific writings. Sentences in active voice are generally clearer, shorter and more direct than those in the passive voice. Sentences in active voice are also more concise than those in the passive voice because fewer words are required to express action in active voice than in the passive. The passive voice robs your work of the energy and aliveness and blurs your reader's sense of who is doing what. Avoid it. कि passive voice को avoid करना चाहिए। जो आपकी scientific writings हैं या जो आपकी academic writing है इसमें passive voice को आप avoid करें। Writing in the active voice rather than the passive voice gives your writing more life and more clarity. Try to use active voice in most situations and you will notice that your writing will stand out, appear more energetic than if you had used passive voice. Good writers prefer active voice because they want information to flow in a clear and direct manner for the readers. Readers prefer reading material written in active voice rather than in the passive voice. Sometimes the overuse of passive voice can make your essay or prose seem flat and uninteresting. However, in scientific writing, passive voice is more readily accepted. Thus, at times, using passive voice helps create an objective, fact-based discourse. Even in the scientific writing, overuse of passive voice means long and complicated sentences that can cause readers to lose interest and become confused, ठीक है। तो passive voice के जो sentences होते हैं वो confusion create करते हैं, उनको जिस हद तक हो सके avoid करना चाहिए। हाँ, जो scientific writings हैं जहाँ पर objectivity required होती है उसमें आप जो है वो passive voice का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा जो है वो पैसिव वॉइस का यूज़ आपने नहीं करना। जी इन जुमलों को आपने पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। चिल्ड्रन कैनॉट ओपन दीज बॉटल्स ईजीली, तो दीज बॉटल्स कैनॉट बी ओपन बाय द चिल्ड्रन ईजीली, ठीक है। द गवर्नमेंट बिल्ट अ रोड राइट आउटसाइड देयर front door. A road was built by the government right outside their front door. Mr. Butt broke the antique vase as he walked through the store. The antique vase was broken by Mr. Butt as he walked through the store. Number 4 है, the construction workers are making street repairs all month long. Street repairs are being made by the construction worker all month long. Sentence number 5 है, the party will celebrate his retirement. तो इसका passive voice होगा, his retirement will be celebrated by the party. Sentence number 6 है, his professor were discussing his oral exams right in front of him. तो इसका पैसिव वॉइस होगा, his oral exam जो है ये इसका ऑब्जेक्ट बनता है, his oral exam was being discussed in front of him by his professors,
ठीक है, इस प्रोफेसर जो है ये इसका सब्जेक्ट है। और सातवां जुमला आप देखें, माई सन जो है ये इसका सब्जेक्ट है। 8 वर्ब है। ऑल दी होम मेड बिस्किट्स, ऑल द होम मेड बिस्किट्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे ऑल द होम मेड बिस्किट्स आर ईटन बाय माई सन। ठीक है, तो दैट इज हाउ वी मेक द पैसिव वॉइस। जी, अब आपके पास जो है वो कुछ जुमले पैसिव वॉइस में हैं, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक्स वर स्टोलन बाय समवन yesterday, तो इसको जो है वो वर स्टोलन से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो समवन जो है वो शुरू में आ जाएगा, समवन स्टोल माई बुक्स yesterday, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दीज बुक्स हैड बीन लेफ्ट इन द क्लासरूम बाय अ केयरलेस स्टूडेंट, तो अ केयरलेस student left his books in the classroom. The house had been broken into by someone while the owners were on vacation. Someone broke into the house while the owners were on vacation. A child was being carried downstairs by a strong firefighter. A strong firefighter was carrying a child downstairs. ठीक है, being carried चूँकि आ गया है तो ये past continuous tense में चेंज होगा। The streets had been blocked off by the police. The police had blocked the streets, blocked off the streets। ठीक है, have you seen the new movie that was directed by Steve Spielberg? ये सेंटेंस में कुछ थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, मे बी उनसे जो है वो ठीक से लिखा नहीं गया। देर आर सम पार्ट्स दैट शुड नॉट बी हेयर, इसको जो है वो एक्टिव में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। माई कार इज़ इन द गैरेज बीइंग फिक्स्ड बाय मैकेनिक, अ मैकेनिक इज़ फिक्सिंग माई कार इन द गैरेज, ये ऐसे होगा। अ मैकेनिक जो है ये इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, so that is how we convert the active voice into the passive voice. Now read the list of the verbs given in the box, then read the sentences that follow. Fill in each blank with the correct past participle of the verb. When you would be doing that, you will notice that you are actually making these verbs passive voice verbs। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 12 जो है इसको आप अटेम्प्ट करें। This is the last exercise for today. Goodbye and take care. I will return to you tomorrow with exercise number 13. Allah Hafiz.